I think we are live. Uh, Hopefully you'll be able to hear me and chill scene करेंगे. हाँ तो एक तो I don't know how many people are watching this और I think zero ही है. बढ़िया एकदम. बस दो तीन चीज़ें हैं. So I've been writing about. So करते करते धीरे धीरे करते हैं. इसमें कोई सेटअप नहीं होगा, ठीक है. ये बहुत चिल सी होने वाली है. लेट मी डिस्कनेक्ट है मेरा. एक तो आईफोन में कनेक्ट हो जाता है. देखो यहाँ कोई स्पीड नहीं आएगी, यहाँ मस्त चिल तरीके से काम होगा, ठीक है. तो यूज़ दिस इफ़ यू वर्किंग और डूइंग समथिंग, तो फन कर सकते हैं. बाकी बोर रहेगा ये. इसको इंस्टाग्राम पे डाल दूँ क्या? स्टोरी डाल सकते हैं. लाइव लाइव देख तो कैसा लग रहा है. पहली बार अपने फीड पे देख रहा हूँ. लाइक लुकिंग इन माय फीड व्हिच इज नाइस. लुक्स गुड. देखो इसमें कोई लाइटिंग वाइटिंग का लफड़ा नहीं है. जस्ट सिटिंग हियर वर्किंग. अभी 1 बजे खाना खाना चाहूँगा, मतलब स्ट्रीम ब्रेक हो जाएगी. बट लेट्स डू दिस. इंस्टाग्राम स्टोरी डाल देता हूँ ताकि लोगों को पता चलता रहे. और देखो अब सुबह के बज रहे हैं 1:45. सुबह के दोपहर के बज रहे हैं 1:45. और मैं जा रहा था एक स्ट्रीम लिखने के लिए. आई हैड टू लाइक राइट अ स्क्रिप्ट फॉर नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो, क्योंकि बहुत समय से यूट्यूब वीडियो पोस्ट नहीं किया. 1 महीना हो गया. आई बीन डूइंग लाइव ओनली. तो मैंने कहा क्यों नहीं लाइव कर लें, क्योंकि थोड़ा सा एक तो सी द थिंग इज दैट व्हेन यू डोंट हैव अ फिक्स रूटीन इन लाइफ, राइट, व्हेन यू जस्ट वांट टू एक्सप्लोर थिंग्स, यू आर ऑन योर ओन, तो तुम बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ वहाँ वेस्ट कर देते हो, राइट. दैट मीन्स what you want to do is you want to take your time and focus on things. तो अभी अकेले में करता तो मैं गाने सुनता, एंड गाने सुनते सुनते धीमे धीमे यहाँ से वहाँ आई वुड हैव बीन लाइक चले गए होते हैं, है ना. सो यहाँ बैठ के अब डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम करेंगे. एंड वैसे फ्राइडे है, 1 बज रहा है, सब लोग काम कर रहे होंगे. Not everyone is freelancing like me, so yeah. But वैसे भी ये मेरे लिए ही है. So I'm gonna play this. म्यूजिक थोड़ा बजा लेंगे, पीछे बीट्स क्रेजी बजा देंगे, एंड we'll just work on this. और तुम लोगों से बात करते जाऊँगा, लिखते जाऊँगा स्ट्रीम, है ना, स्क्रिप्ट. और करते स्टार्ट. थोड़ा मेरा लिंक पोस्ट कर दूँ इंस्टाग्राम पे, जस्ट इन केस कोई आ जाए फ्री बैठा हो सकते हैं. बहुत से लोग हैं मेरी तरफ फ्री, सो व्हाई नॉट. निकी चलो डन यार. स्ट्रीम का तो गया, ट्वीट से चली गई. ट्वीट में तो ठीक है, बट यार व्हाट इज बॉडी डबलिंग, आई डोंट नो क्या होता है. हाँ देखो बाल सब सुबह मतलब बाल सेक्सी बहुत लगता है. तो यार मॉर्निंग में बाल लुक्स गुड. कमिंग टू दिस, लेट्स जस्ट स्टार्ट. सो यार मैं मोस्टली स्क्रिप्ट्स लिखता नोट्स में, ठीक है. आई एम गोना हाइड एवरी सिंगल थिंग. फालतू में तुम एक्स्ट्रा चीज़ें देख लोगे, मज़ा नहीं आएगा. तो लेट मी. अरे अंसर हाउ यू, वेलकम. आ जाओ, क्या कर रहे हो, फ्री हो? फ्री हो तो आ जाओ. जस्ट ड्रॉप मी DM या ट्विटर भेज दो, अभी मैं आपको लिंक भेजता हूँ. साथ में बैठ के लिखते हैं स्क्रिप्ट थोड़ी. आई वुड ऑल्सो गेट व्यूअर्स पर्सपेक्टिव, और थोड़ा जो मेरा परफेक्शन वाला पेन है ना, वो कम हो जाएगा, बिकॉज यू वुड बी देयर. ड्रॉप मी मैसेज नसर प्लीज़. थैंक यू. एंड वी आर हियर इन द स्क्रीन शेयरिंग. बाय द वे ये मैंने की ऑन कर दिया इसके अंदर, which is looking bad. I'm gonna boom, yeah, here. So देखो generally I write my script on notes. So ये अगर देखोगे notes पे I have these scripts, ठीक है, सब चीज़ें वहीं होती हैं. And I have so many scripts.
right? And random scripts like so the way it works is like मेरे को एक idea आया है, अब मुझे उस पर काम करना है, and I'm like कैसे करेंगे, कैसे लिखे, क्या करें, right? So I just add the things, then I go into much detail of do I want to go into that or not, और क्या करना है उसे figure out करते हैं, ठीक है. So अभी तक जो स्क्रिप्ट्स आई है उसमें बहुत रैंडम था. नाउ आई वांट देम टू टेक अ नॉच अप एंड आई वांट टू मेक देम कि यार बढ़िया चीज़ बने, राइट. फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन ऑफ माई फनीएस्ट. आई वांट टू डू दिस सीरीज which is just designer daddy. Like I thought I'm a designer and a daddy. Why not just make a series of videos? जहाँ पे as a father I'm talking about like teaching design to kids, like very basic. So it's just like what are colors? Why only tall colors? Print color कैसे होते हैं? CMYK and all that, like very basic things. So like if I'm teaching Rudra, right? तो क्या सिखाऊंगा मैं उसको design? वही same चीज़ मैं YouTube पे करूँ. So I thought this would be very fun. And ये लंबी चल सकती है, it can be go long and there are so many different things, right? This is a fun idea, design the setup review, which is कि what we'll do is, एक मिनट पहले मुझे ये मैं ये वहाँ ले आऊँ. Let me just get the comments in the front, तो मेरे को comments दिखते रहे. हाँ, so like I'll just check your क्या बोलते हैं your desk and just give review on that, what can be done much better and all that, right? So ये चीज़ कर सकते हैं. So there are so many different ideas, but the thing with ideas and execution is that someone who's good with execution might not be good with ये क्या हो गया, अरे some shit happened, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई यार, क्या ही पेन है. हाँ आ गया सॉरी. सो एग्जीक्यूशन अच्छा हो सकता है पर शायद तक आइडियाज़ ना हो. अब मेरे पास आइडियाज़ बहुत सारे हैं बट एग्जीक्यूट करने में बहुत लेजीनेस आ जाती है मेरी. लाइक आई एम बिकम टू लेजी एंड आई डोंट डू दिस शिट. मैं फिर रैंडम आया था यूट्यूब वीडियो विच आर गुड, लाइक वो वर्क कर जाता है बिकॉज वो एक स्टाइल ऑफ टॉकिंग है विच आई हैव सीन अभिनव डू वेरी गुड, राइट. बट व्हेन यू रिसर्च ना इट गिव्स यू गुड स्ट्रक्चर और वैल्यू टू वैल्यू कॉर्ड बनता है. तो थोड़ी मेहनत लगती है बट आई फील इट्स मच बेटर इफ़ यू कैन डू देन डू दैट. लाइक वो ज़्यादा ज़रूरी है देन डूइंग इट रैंडम ऐसे, ठीक है. तो what I'm gonna do is I'm gonna find the comment section, ठीक है. विंडो कहाँ गई कमेंट्स यार, कमेंट्स में दिख नहीं रहे हैं, गैप हो गए. कमेंट वाली जो स्क्रीन थी ना मिल गई, यस. हाँ तो आंसर इज ट्रैवलिंग, तो उनको छोड़ते हैं हम. वी गना जस्ट राइट इन दिस नोशन एज दैट. मैं इसको पहले उस पर कर रहा था, आई वॉज डूइंग दिस ऑन नोट्स पे, बट नोट्स में इशू है, नोट्स अच्छा है बट इट्स नॉट वेरी कोलेबरेटिंग ऑल दैट. तो मुझे किसी और को भेजना हो सब करना हो तो नहीं हो सकता है. तो आई रेदर जस्ट डू दिस एंड करते हैं. हम गोना चूज नोशन ओनली, सो यू जस्ट सी नोशन एंड बाकी सब कुछ मत देखो आप. एंड यू कैन सी दिस नाउ ओनली द नोशन शुड बी विजिबल. मैं थोड़ा और क्लीन अप, बट आई एम डूइंग दिस अ वेरी ऑन द रॉन्ग स्ट्रीम क्योंकि ये मेरी थर्सडे वाली नॉर्मल स्ट्रीम है. आई डोंट वांट टू मेस अप दैट ना. तो विंडो स्क्रीन पे चलते हैं एंड विंडो स्क्रीन शेयर कर लेते हैं. नाइस. अब एक चीज़ कर देते हैं, दिस शेप जो है इसको ऑटोमेटिक ही नहीं शेप को हम वापस शेप को हम वाइड रखते हैं. दैट इज़ मच नाइसर. नोशन को थोड़ा सा हम जूम इन जूम आउट कर लेंगे ताकि वो अच्छे से अरेंज हो जाए इस चीज़ में. और यप करते हैं, डन. सो आई एम गोना प्ले सम बैकग्राउंड म्यूजिक, पीछे चलता रहेगा, इग्नोर दैट. मुझे थोड़ा वॉइस कम आएगा उसका बट यू विल एबल टू. तो कर देंगे हम स्टार्ट. और तो क्या ये फिर टू मच टाइम पास वी हैव डिड. चलो मतलब कमेंट्स में देख रखे हुए कमेंट साइड में से मैं शायद देखूँ शायद ना देखूँ. सो डोंट वरी इफ़ यू डू समथिंग, देख लेंगे सर. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मेनी पीपल, ज़्यादा टेंशन नहीं है. करता है कूल. यू नो व्हाट, फर्स्ट नहीं करता हूँ ना नोशन को फालतू में छुपा के रखना. यस हाँ लाइक मच बेटर दिस लाइक दिस. यप. तो अभी आई डिवाइडेड दीज थ्री थिंग्स इनटू. पहले तो मैं बहुत सारी चीज़ें लिख ली, जो भी चीज़ें हैं अंदर रूम में वो लिख ली हैं, ठीक है. एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज ट्राइंग टू.
सो पहले मेरे माइंड में ये आइडिया आया था कि व्हाट इफ़ आई गो टू अ वीडियो एंड रिक्रिएट दैट, राइट। सो उसके लिए मुझे तुम्हें पूरी स्क्रीन दिखानी पड़ेगी ताकि तुम उस वीडियो को देख पाओ, which I should have done that. Yeah, you know what, fuck Windows, I'm gonna do the only the whole screen. क्या ही छुपाऊँ तुम लोगों से तो। बट या सो फर्स्ट माई प्लान वॉज कि ये जो नोशन है, ठीक है, इस नोशन के अंदर ये लिंक थे, लाइक आई लाइक दिस वीडियो अ लॉट एंड द वे इट वॉज के सिंपल बी रूल्स हैं स्टार्टिंग में विद गुड ट्रांजिशन ऑब्वियसली, एंड देन द गाय कम्स एंड टॉक अबाउट थिंग्स कि क्या है कैसे है, एंड दिस इज द होल वॉइस ओवर, राइट। एंड द गुड थिंग अबाउट दिस वॉइस ओवर वॉज कि वो सिर्फ बातें करके बी रोल नहीं चल रही थी, ही वॉज चेंजिंग हिज प्लेस। अगर हम टेस्ट बात करें, डेस्क पे बैठा हुआ है, टॉकिंग अबाउट एक्सेसरीज, तो वैसे खड़े होकर सीरीज का एक वीडियो बना दिया एंड ऑल दैट, राइट। केबल मैनेजमेंट तो उसकी बात कर लेगा एंड ऑल दैट, बट इट्स अ वेरी गुड वीडियो व्हाइल डूइंग दैट। तो मैं सोचा कि ये बनाता हूँ, बट देन अनदर रैंडम आइडिया इन माई माइंड केम कि यार व्हाट इफ आई मेक अ वीडियो लाइक दिस, लाइक फुल सिनेमैटिक एकदम, तो कैमरा तो है ही अपने पास, एंड अब थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आ गई है सिनेमैटिक्स वाले की, लाइक व्हाट इफ आई डू दिस कि पहले साउंड प्ले हो एक, उस पर ही सारी रील्स की तरह पहले एक वीडियो पूरा आ जाए, और उसके बाद देन आई जस्ट ब्रेक इट एंड कम इनटू द स्टेज और बस बातें करते रहें एंड पूरी चीज़ें ऐसे इमेज में दिखा दूँ। सो ये थोड़ा स्टोरी बेस, थोड़ा ज़्यादा स्टोरी बेस है, विच इज़ मच नाइस है। तो ये दो आइडियाज़ थे, एंड देन मेरे को एक आइडिया ऐसा आ गया, यार ये तो दोनों बढ़िया चीज़ें हैं, बट विल दैट लाइक टेल माई स्टोरी, क्या मुझे मेरे को बताना है वो बता पाऊँगा कि नहीं बता पाऊँगा, हाउ डू आई डू दैट। तो हम आ गए अपने नोशन पे, अब मैं दिखा देता हूँ। सो इसमें हमने क्या किया, पहले सारी तीनों चीज़ों को कलेक्ट कर लिया और उसके बाद थीम बना दी मैंने, लाइक सो आई वाज थिंकिंग कि लाइक हाउ डू आई नेविगेट दिस स्टोरी, राइट, कि क्यों इसको पूरा बनाया गया। सो लाइक यू नीड अ कॉज फॉर द स्टोरी टू हैपन, राइट। तो मेरे पास 3 कॉज थे, लाइक आई हैड टू कवर दीज 3 पॉइंट्स विच वर कि यार वर्क ऑन माई डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, दूसरा रिकॉर्ड एंड क्रिएट कंटेंट जो इंस्टाग्राम पे आई बीन डूइंग एंड यूट्यूब पे भी आई डू, एंड दिस वाज अ प्लेस ऑफ माई ओन। सो आई थिंक मेनी ऑफ यू नो दैट आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, और अपना रूम नहीं होता है लाइक किड्स के लिए, राइट। सो व्हाट यू डू इज़ यू लिव विद अदर सिबलिंग्स एंड एवरीथिंग, तो कभी वो अपना स्पेस नहीं हुआ वेर यू कैन अरेंज थिंग्स लाइक यू लाइक, राइट, वो कभी नहीं हो पाता है। सो आई थॉट दिस कैन बी माई प्लेस, और इसमें हर चीज़ मैं अपने हिसाब से करूँगा, लाइक आई विल डू एवरी सिंगल थिंग हाउ आई वॉन्ट इट टू बी, राइट, लाइक प्लान इट लाइक दैट। सो ये पूरा सीन था, चश्मा निकाल देता हूँ, रिफ्लेक्शन आएगा, वोंट लुक गुड ऑन यूट्यूब, हाँ। सो ये था, देन आई वेंट इनटू आउटलाइनिंग ऑफ द स्क्रिप्ट। सो द स्टेप बाय स्टेप, पहले एक बार क्लैरिटी ला ली माइंड में कैसी स्टोरी चाहिए मुझे, फिर आउटलाइन हो जाएगी कि भाई हाँ। सो ये थोड़ा सा ज़्यादा सेक्सी में सोच रहा था, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि जो मेरा पुराना ऑफिस था ना, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो मेरा पुराना ऑफिस जहाँ पे आई यूज्ड टू वर्क विद माय फ्रेंड्स, ठीक है, तो वहाँ पे आई स्टार्टेड ऑन ट्विटर बाय पोस्टिंग अपडेट्स ऑन दैट ऑफिस कि यार यहाँ पे मॉनिटर ले आए हैं, यहाँ पे कीबोर्ड ले आए हैं, यहाँ पे ये आ गया है, वो आ गया है, और ये सब करके आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन ट्विटर। उसके बाद फिर देन आई वेंट टू माय होम ऑफिस जहाँ मैं अभी हूँ, एंड वो सारी चीज़ें, राइट। सो आई थॉट कि व्हाट इफ़ आई डू अ ट्रांजिशन, कि मैं, कॉज जो ऑडियंस देखेगी इस वीडियो को, राइट, मोस्टली ट्विटर वाली ऑडियंस होगी जो जानती होगी, उनको वो रेफरेंस पसंद आएगा। तो अगर मैं पहले उस ऑफिस में बैठा हूँ, वहाँ बात कर रहा हूँ, देन आई डू अ स्नैप एंड कम टू दिस ऑफिस एंड यहाँ बात कर दूंगा, तो इट विल लुक नाइस। सो जैसे वो सेकेंड वीडियो की तरह कि डिफरेंट शॉट दिखा दो और जूम इन एक्शन दिखा दो, ये सब बातें हो गई, देन चेंज टू दैट ऑफिस, चेंज करके फिर वापस घर पे आ जाओ। इतना क्लैरिटी मुझे, दिस इज़ व्हाट आई हैड क्लैरिटी कितना करना है। देन आई स्टार्टेड राइटिंग अ ओपनिंग ऑफ द होल थिंग, ठीक है। सो फर्स्ट ओपनिंग वाज लाइक टॉक अबाउट वर्क स्पेस एंड व्हाई आई मेड दिस स्पेस। उसके अंदर आई कैन डिवाइड देम इन 3 डायरेक्शंस। लाइक व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 3 डायरेक्शंस, लेट्स यूज केसी का स्टाइल। आई डोंट नो हाउ एनी ऑफ यू नो केसी, यू माइट ऑब्वियसली नो केसी। उसके वीडियो में स्टाइल होता है व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स ना, व्हाई डज इट, ही डज अ ओवर द टॉप कैमरा, पेपर ले लेगा और उसमें स्केच पेन से लिख देगा। एंड आई लाइक दैट अ लॉट, आई कैन मेक 3 सेक्शन एंड आई कैन टॉक अबाउट दैट, राइट। देन आई ट्राई टू डिवाइड 3 थिंग्स। तो जो डेस्क सेटअप आ गया वो पूरा डिज़ाइन लाइफ में आ गया, DSLR लाइट्स, आइकिया डेकोरेशन आ गया, वो पूरा कंटेंट में आ गया, और फिर जो गेमिंग चीज़ें हैं, बुक्स हैं, फ्लोरिंग तो नहीं बट बीन बैग्स, वो सब चीज़ें जो होंगी वो सारी आ जाएंगी चिल वाले लाइफ सीन में, राइट। तो ये 3 चीज़ें आई थॉट के कुड बी नाइस डिवाइडेशन।
उसके बाद फिर बोनस कॉन्टैक्ट मैंने क्या किया, पूरा ऑफिस को स्मार्ट बना दिया है। लाइक आई हैव एवरीथिंग विथ माय गूगल डिवाइसेस, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो उसके बारे में बात कर दूंगा, इट विल बी अ गुड एंड राइट। देन आई थॉट हाउ डू आई टॉक अबाउट दिस कंटेंट, कि चलो पहले जाएंगे स्टार्ट विद द कोर, इसमें बात करते हैं ये। तो सिर्फ आउटलाइन ही चल रहा है अभी तक। आई हैवंट रीच टू अ एग्जैक्ट स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ हो गई, तो मुझे क्लैरिटी आ चुकी है चीज़ें दिखानी कैसे हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक आइडिया आ गया है कि भाई वो फोटोज़ दिखाने, पुराने वीडियोज़ दिखाने, बिकॉज मैंने बहुत रिकॉर्ड किया है राइट। सो आई कैन यूज़ दैट एज फ्लैश बैक, सो मेरी स्टोरी जो है वो बना सकता हूँ। सो अब मैं स्क्रिप्ट लिखने बैठ रहा हूँ उसी के लिए। आई थॉट साथ में लिखते हैं। चलिए, आई वॉज थिंकिंग कि किसी और स्क्रिप्ट राइटिंग एक्सपर्ट को ले आऊँ जिसको एक्चुअली राइटिंग करना आता हो राइट। बट आई डोंट थिंक कोई मिला ऐसे। तो हाँ, हम अकेले कर रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो फाइन। सो गाना आ गया, वी गोना टर्न ऑफ। सो वी हैव एवरीथिंग वी नीड इन दिस नोशन डैशबोर्ड, कहीं और जाना नहीं पड़ेगा हमें। तो जस्ट स्टार्ट राइटिंग अगेन। मैं बहुत सो आई हैवंट स्टिल फाइनलाइज कि मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ या हिंदी में कर रहा हूँ। मोस्टली आई एम थिंकिंग इंग्लिश में करता हूँ। इंग्लिश का बेनिफिट ये है कि आई कैन यूज ChatGPT टू हेल्प मी इन द स्क्रिप्ट राइटिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आई कैन यूज़ क्या बोलते हैं, थोड़ा ऑडियंस अच्छी मिल जाएगी। हिंदी में थोड़ा बढ़िया है, बट अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए इट्स गुड टू हैव सेटअप। थोड़ा इंग्लिश पब्लिक ज़्यादा अच्छी लगती है राइट, लाइक इट्स वेरी मच दैट वॉइस एंड आई वांट टू गो विद दिस वॉइस, लाइक कि एकदम स्लो नहीं होती है कि आई वाज अलोन इन द ऑफिस व्हाइल वर्किंग, सो वो पूरा एकदम वो वाला वाइब। बट हाँ, सो व्हाट वी गोना डू इज ChatGPT पे चलते हैं, थोड़ा ChatGPT को भी ट्रेन कर देते हैं ना, क्यों नहीं। But I keep doing some random shit, I don't know क्या कौन सा चैट बॉक्स खुलेगा। कुछ तो खुला था, but yeah, I'm gonna do a new chat, I'm gonna hide this. You are so अभी मैं ChatGPT को एक prompt दे रहा हूँ, which is that you are a writer who writes desk setup video scripts for YouTube. You will ask me questions and create a script plus a short list. ठीक है, ये हो गया। Then here's, ठीक है वो हो जाएगा। एंड देन उसको मैं बोल दिया क्वेश्चन का बता, तो वो क्वेश्चन पूछ सारी चीज़ें कर देंगे राइट। एंड आइडिया स्किप हो गया, ये हो गया, यहाँ तक ये चीज़ें आ गई हैं। एंड हाँ, यू विल ऑल्सो डिफाइन अ स्टोरी फॉर्मेट फॉर दिस द वीडियो, द स्क्रिप्ट शुड align with the emotions। ये लिख दिया है। अब वो ऑब्वियसली इसको डेटा मैंने दिया नहीं है, तो अभी उसने पूरा एकदम स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर दिया है। आई नीड टू स्टॉप। उसे पूरा एकदम क्वेश्चन वन जैसे हैव यू एवर फेल्ट लाइक, उसको आइडिया ये लगा है कि वो Q&A में हो रहा है, विच इज़ नॉट राइट। सो आई हैव टू री राइट दिस प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट उतना अच्छा नहीं गया। सो आई एम गोना YouTube, I have to set up for YouTube. Here's my here's a brief of the video, ठीक है। और इसमें वही बता दूंगा, divide the video story in 3 part. Design life, creating content on YouTube, and having a chill space। ठीक है, ये हो गया। Here are the list of devices I have। यहाँ पे मैं अनुष्का वाली लिस्ट पेस्ट कर दूंगा। तो देखो, just cause you know
चैट जीपीटी डजंट मीन कि तुम उससे अच्छा कर लोगे, राइट? यू नीड टू ऑल्सो फिगर आउट शिट बाय योर सेल्फ. तो वो चीज़ें करते रहनी चाहिए. यू नीड टू फिगर आउट थिंग्स. फर्नीचर तो छोड़ देता हूँ मैं. Want to add jokes and humor in the script. It will also have flashback photos of my old workspace, so include that. Keep in the mind that the video will talk about my journey coming from a pad setup to a personal home office, and how I've designed it for above 3 parts. यार फोन आ रहा है, एक सेकंड देना. हेलो सर. मैं अभी तो क्या बोलते हैं यूट्यूब पे लाइव हूँ. अरे स्क्रिप्ट लिख रहा था, तो मैं अकेले बैठे क्यों ही लिखो, यूट्यूब पे लिखता हूँ. आ जाओ, फ्री हो तो आ जाओ. हाँ नहीं करते हैं. तो मैं आपसे लाइक आई वांट टू हैव समथिंग दैट मिस्टर टॉक. आई पिंग यू व्हेन आई गेट फ्री फ्रॉम दिस. ठीक है, शाम तक आई पिंग यू. चलो डन. थैंक यू सर. या कमिंग बैक. ठीक है, चलो देख लेट्स सी चैट ने क्या किया है. Shortlist, I think we did. अरे यार शॉर्टलिस्ट निकाल ही रहा है. दिस इज अ पेन. एक बार तुम कुछ बता दो ना चैट जीपीटी को, देन इट जस्ट रिमेंबर्स दैट. सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू गो टू अ न्यू चैट एंड वहाँ जाके लिखना पड़ेगा ये मुझे, बिकॉज वहाँ पे उसको पिछले उसकी मेमोरी नहीं रहेगी ना. हाँ सी and all that, right? So this is at least कुछ तो, this is much better than the वो वाला part ना. So एक आइडिया मिल जाएगा, इसको हम उठाएंगे और देखेंगे अच्छा मिल रहा है नहीं मिल रहा है. नहीं मिलेगा तो हम वापस खुद लिखने बैठ जाएंगे. अमेजिंग. ओके सो उसने क्या किया है. ये अच्छी लाइन है. लाइक how I designed this to get a 3 as a part of my life design, creating content and having a chill space. This is a good line, see? So I can start with this. Or I can think of the story. Life allocating how boys and best stress balls. This is a good joke. The only thing organized was my collection of stress balls. I can use that, na? इससे पता क्या है इसमें, this is good, but this is not very detailed script. So what I could have done is I could have sent them send ChatGPT a script of a YouTube video कि ये है, get a script for me on this, including this list and everything. But I think हम ज़्यादा नहीं घुसते हैं. Like this is a good way of going, like understanding few good jokes and everything I can do, or I can get it to clean up. Let's just write by ourselves. Okay. So what I'm gonna do is GM everyone. Chat नहीं पढ़ी थोड़ी देर से. I'm gonna reply to chat. Hey Anurag, hey Gulshan sir, GM, how's going? Yeah, so खुद ही लिखते हैं बस. एक तो लिखने में बहुत आलस आता है. Like writing is very so design बना लो तुम लोग, लिख पाओ मत. Cool. So what I want to start with is I'm gonna start, the first emotion is gonna be a flashback. Like I want to start with that that I was in this office and all that was happening, right? So because पहले वाले में ही I want to capitate बोलते हैं, क्या बोलते हैं, like लोगों को पकड़ लेना एकदम ना, क्या लोग एकदम रुक जाए देखने की हाँ कुछ है, right?
So I want to start with the COVID dollar story. So I'm gonna go with when COVID started. COVID started तो नहीं होगा, but see this is why like इसमें क्या करते हैं हम लोग. अरे राम राम रजित सर, आ जाओ फ्री हो तो come join me. राम राम प्रणय सर. इसमें क्या करते हैं, like so I use a tool called audio pen, ठीक है, and what it does is whatever I say it turns into text. अगर देख लो कितना मैं AI पे डिपेंडेंट हो चुका हूँ लाइफ में अभी. This is all my LinkedIn posts are from here only. So what I have to do is just start saying on this, and it creates a script. So लिखना नहीं पड़ता मुझे. So the better, like the benefit of that is कि if I write everything ना, I'm gonna think twice or thrice before writing it, और ये चीज़ें break कर सकता है. But if I just go to speaker, बोल दो जो मेरे मन में आ रहा है, बस निकलता जाए, then I can edit it out. So ये करता हूँ. मैं just write down this section of COVID वाला ना. So in 2020, we all was staying at our houses, and at that time I was 2, and this was my work setup when I was. अच्छा यार वो setup update कर रहा है यार, देख रहे हो. कोई नहीं, let's do it live लिख देते हैं. आई बस ये कि बस लिखते जाना है, रुकना नहीं. अगर रुक गए ना तुम लिखने में तो फिर माइंड ब्रेक हो जाता है. When everyone was struck, we all were stuck in our houses. So I was 2, but I was blessed that I had a job which can be easily done remote. Good storyline. I mean, this takes people in astrology, तो अच्छा रह सकता है. क्लीन अप करेंगे लाइंस को, but let's get into it. Writing is it a remote designing. हाँ, so इसके बाद remote designing, but designing. I was working with this setup. I want to add a picture of my old setup. I know, not very promising and ergonomic, but it was working, so definitely good. So ये पहले वाला स्टोरी बता दिया, वहाँ से कोविड का आ गया, but I could not sustain the setup for long time, so I updated it to another level. Photo of updated setup. Okay, and this was good. Was working 12 hours a day on this, while this in my bedroom. I had a child. This pretty good. Was working on this. This is good. That's it on this bedroom. क्या बोलते काटे इंग्लिश में क्या बोलते हैं. I survived the whole COVID lockdown, not COVID, lockdown in this space. But I was missing one major thing. Something collaboration. Even though working digitally with my team, having someone near you to brainstorm ideas is very important.
important, and believe me, I can add a joke. So I talk about the bedroom thing, na? I can add a joke. Believe me, my wife wanted to talk about design after 6 months of lockdown. Can be fun joke यहाँ पे. I can see joke कितना अच्छा करना है, but हाँ. तो यहाँ पे पूरा सेटअप हो गया. मैंने ये बता दिया कि यहाँ issues आ रहे थे, and I have to also save one thing like lockdown and one more. So यहाँ पे इस वाले issue में I can also add one more point. missing thing में. So here I can have two. एक तो collaboration वाला idea हो गया where I can do this joke मेरी wife वाला, and the second option for this. Second option was designing a space to maximize my productivity. Spelling बहुत गंदी लिखता हूँ मैं, so don't mind that. I trust AI or even Google कर देगा सही. I was saying designing a space to maximize productivity. Now that my company was full remote, and I had to work in this setup, work in remote, not for unseeable future. Boy, seeable future, some word like this है ना, वो मैं बना दूँगा बाद में जाके. Future. So I made a change. I found two designer fans near my house, and we together rented a new office. Here I can show pictures of new office. Now ये वाले पार्ट को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है. I don't want to expand this because फिर ये setup video नहीं रह जाएगा. Then it becomes like a story वाला video. तो मुझे इसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा I have to keep this in 3-4 lines, or I have 2 paragraphs max. I don't want to go it for more than a minute, right? I want to design a fancy figures with a new office, and I started setting up my desk. अब इसको ऐसी now this I can do the तारक मेहता वाला नहीं करते वो लोग, कैसे recap करते हैं पूरा, like blah 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 and all that recap करते हैं. So I can do that joke here, I can do that thing here, or I can just do that. And for the next 9 months I worked from this place. ये हो गया. I also work on this place, office and all that. सब बढ़िया चल रहे हैं. Like this till here it looks decent. I have good direction, तो बढ़िया चीज़ सेट हो रही हैं. अब थोड़ा और सोचना पड़ेगा चीज़ों को अच्छा करके कि how can I make this थोड़ा सा और better, right? So I made the change. I found designer friends in my house. Next 9 months I worked from this place, but having this place sparked the idea in me. What if I have my own personal space? And after this now I can go into the direction, जो वो 3 डायरेक्शन नहीं है पूरा, क्या बोलते हैं, 3 लोगों का डायरेक्शन, के यार 3 कैटेगरी से डिवाइड करी थी ना, उस पे now I can go. But this idea became more strong when I ventured into content creation, show thumbnails and Twitter clips. So यहाँ पे वो एक कच साउंड के साथ में I'll add that के कम्युनिकेशन घुस गया था.
What a clips. My existing collaboration office. This was good for designing, but not for content creation. I still managed it. I'm still created content here for 3 months before the final nail before I had to move out cause my son was coming back home and the commute, and I had to be with him. This guy, like, I'm gonna figure out better wording for with to be with him. ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हैं पूरी. Like good फर्स्ट ओपनिंग अच्छा हो गया. नाउ दिस इज जस्ट टेलिंग द स्टोरी ऑफ, लाइक इसमें अगर देखोगे ना तो तुमने तीनों जो कैटेगरीज इनकी बात कर लिया, डिजाइनिंग स्पेस, कंटेंट क्रिएशन एंड बेबी वाला पूरा पार्ट आ गया, राइट. सो नाउ आई एम गोना आउटलाइन दैट एंड देन मूव टू द मिड सेक्शन ऑफ इट, विच विल स्टार्ट द होल सेटअप का टूर पूरा चलेगा, घर का रूप दिखाऊंगा ना, ऑल दैट, एंड देन आई विल जस्ट गाइड स्टोरी टू स्टोरी, स्टेप बाय स्टेप. बिकॉज मैं ट्विटर पर पूरा शेयर किया हुआ है ना इसका, क्लिप्स टू क्लिप्स की मैंने आज ये ऐड किया है, आज ये ऐड किया है. So that clips I'll also use and set up them into this video. Okay, video I can make, but this needs to be like a story. भले आधे घंटे का जाए, because मुझे like I don't want people के लाखों views आए, I just want even 10 people watching, बहुत बढ़िया है. But वो जाना ना चाहिए, right? Like that's what I'm visualizing right now. ठीक है. Coming back. तो उसके बाद let's do this. कमेंट चेक करता हूँ एक बार मैं please. So Rachit sir is saying Ram sir, kiri cheese. Prana sir is saying Ram. Sid sir saying Sat Sri Akal ji. Just spelling it like deva, but I get the feeling. Thank you sir for the font. This is Kalakar. Let me show you अच्छे से. Again, चंबल में ही है. They have messed up the width. So if you see, this is very thin. I wanted it to be more width, but the thing with LED lights is कि जो ये वाली लाइट है ये कुछ 6 mm की आती है, so इससे ज़्यादा बोल्ड हो ही नहीं सकता है. So I'll have to go with this and यही वर्क करेगा. Cool है. चलो, coming back to the screen sharing. हाँ ठीक है, ये अच्छा होगा. This is good. यहाँ तक अच्छे आ गए. Now started thinking like a designer. I had 3 goals. So this is the केसी ऐसे वाले बोल रहा लिख के कर सकता हूँ मैं, या तो I can have on screen के first make space productive to design, make a space ideal for content creation, make a space where I can spend time with my kid and chill. So obviously I'll divide them. So see, इसको clean up तो होता रहेगा. Like what I'll do is I'll send this to ChatGPT, वो clean up करेगा. बहुत चीज़ें होती रहती हैं, तो इसको छोड़ते हैं. But this is idea. ये हो गया. Now the thing is that do I want to go very back? So because if you go to Instagram stories, you will see like, so I have like 100 से ज़्यादा stories हैं Instagram पे. Home office की, like ये कितनी stories हैं? Yeah, 15 नवंबर से I started doing this home office setup पूरा. 15 नवंबर से the whole story is, this is when it was being made and all that. So 15 नवंबर से पूरा 6 महीने का पूरा मेरा stories का वो सब collection, right? So I think I'll just go. So first thing first, made a 13 by 10 room, which I can
Oh no! I remember now. So what I did was when I was starting this, I also did a 3D room, right? So I wanted to talk about that also. So I started with outlining space and doing 3D modeling in modeling for interior. So picture of 3D model. अगर तुम लोग I don't know how many of you remember, but अगर तुम लोग को याद होगा तो I have this 3D model का 3D सर्च करो, एडवांस में जाओ, 3D from yep search. म्यूजिक बंद करता हूँ क्योंकि दैट कहाँ गया म्यूजिक यार, टर्न ऑफ द म्यूजिक, बस बढ़िया। म्यूजिक अच्छा होता है बट वो ये कि यार व्हेन आई हैव टू री यूज दिस क्लिप तो होता नहीं है। कहाँ गया यार 3D तो मैं 3D काम भी बहुत किया था ना यार उस टाइम पे, तो 3D तो नहीं मिलेगा बट ऑफिस आई कैन सर्च। Yeah, see at that has पे ये update like when I got the table and got the good angles, colors करा दिया था, तो I like write. This is the thing, this is an old office by the way who don't know, when I used to work with people. So यहाँ you can see यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे लोग like this guy is here, we have this whole thing not set up and all that, right? So चीज़ें बहुत पुरानी है। Like by the way in this office I did everything by myself, like so setup खुद ही किया हुआ है cause fun था। So colors are here। हाँ गया यार वो पोस्ट, हाँ ये रहा दिस पोस्ट राइट। तो मुझे 3D मॉडलिंग मैंने कर दिया था। सो आई जस्ट शो दिस वांटेड टू रूम टू लुक लाइक दिस। सो आई कैन टॉक अबाउट थोड़ा सा आर्किटेक्चर वाला भी चीज़ आ सकती है इसके अंदर। मॉडल आई फाउंड स्पेस ऑन माई रूफ, टेरेस नॉट रूफ, टेरेस ऑफ एग्जैक्टली 13 by 10, which was more than enough for me. So I added, like I can write about, yes, but I can see this, I goes back to outline enough for me. So I divided the room into two part. The front wall became my design setup, and back wall would be to create content. This is a good part. I can talk about this. ये हो गया बढ़िया। What am I gonna say? I'll just talk about, I went with accent wall with black. I mean, it was dark purple but with black, and the whole room with white. So I have enough lights. इसमें तो क्लीन अप करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है थोड़ा बड़ा हो रहा है, दिस सेक्शन इज गेटिंग टू आउट ऑफ हैंड, बट करते रहेंगे। यू नो the layout was done. It was time to arrange तो नहीं but design the setup. Setup. So देखो कितना लिख लिया, इतना मैं लिखा नहीं पिछले 10 दिन से। वॉइस AI आने के बाद बहुत आलस हो गया है। सेटअप, शो अ पिक्चर ऑफ द न्यू सेटअप। Let's go into this setup with 3 parts. यहाँ वापस जाएंगे डिज़ाइन वाले पे, and I will go
design, and I'm just writing on this. Now it comes to this part where I have to like go to the setup part of it ना, where I divide them कि हाँ office के लिए ये चीज़ें use की space. So what I'm gonna start is I'm gonna start slow, and I'm gonna do is let's start with the desk डिटेल लिख दूंगा, desk details इसका भी रोल आ जाएगा, वो वहाँ पे बोल लूँगा पूरा, I'll have to write that as details. Then I am powering this setup with a MacBook M2 ये आ जाएगा टाइटल में. फिर then I'm going to talk I'm using a desk, I'm using a single monitor setup to setup. I tried क्या बोलते हैं, tried dual monitor setup, but found it, see I missed adding jokes in the last part because मैं अब डिटेल में घुस गया हूँ ना, पर found it very distracting. So one single monitor, so single like साकिर भाई जोक्स देख लेंगे अच्छे से ऐड कर देंगे, बट हाँ. सो ये हो गया बेसिक पार्ट. एंड देन मॉनिटर आई एम यूजिंग दिस मॉनिटर. सो डिटेल जो टेक्निकल डिटेल आई हैव टू फाइंड आउट एंड स्टडी, सो दैट आई विल ऐड ऑन द स्क्रीन. मॉनिटर फॉर कलर करेक्शन as a designer. Colors are very important and all that, like typical stuff के यार ये ज़रूरी था मेरे colors. I have to find a very collaborated environment and all that, and important in my day-to-day life. Cool. I went with for my inputs I went with I'll need a segue to move to keyboard and mouse. With keyboard, my first mechanical keyboard, and MX Master 2S mouse. इनके बारे में लिख दूंगा, माउस के बारे में क्यों क्या थोड़ा एक दो लाइन ऐड करनी पड़ेगी, बट इफ़ आई डू दैट राइट नाउ तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा और आई वोंट बी एबल टू कंप्लीट द होल सेटअप, बड़ा पूरा स्किप नहीं हो पाएगा, तो ये फिनिशिंग नहीं हो पाएगा. देन आई विल जंप इनटू दिस. एंड ये हो गया. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द डेस्क सेटअप पे. माउस आ गया, कीबोर्ड आ गया, क्या क्या रह गया, मॉनिटर आ गया, कीबोर्ड आ गया. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड एज नाउ most of all virtual calls are part of our life. I got the C920 webcam and this Samsung mic. Now the Samsung mic can be a good transition into creation or a thing, cause Samsung mic से ही मैं creation में घुसा हूँ ना. So I was using this mic to do the whole thing. So वो कर सकते हैं. I want to talk about AirPods and everything, cause वो उतना मजा नहीं आएगा. iPad भी boring चीज़ है. Now I could have used my AirPod as microphone, but buying this professional microphone helped me do two things at once. Which brings us to second part, which is
content creation. I had amazing audio cause of this mic. I needed video. I was using my iPhone to record most of my content, but then bought Sony 8600. Talk about why this camera and which lens. But creating. So by the way, what I'm doing right now is let me just come to the stream also. Koi hai ki nahi? Yeah, coming back. So what I'm doing with this transition. So मैं वहाँ second transition कर गया, like content creation based transition हो गया पूरा. Now the transition needs to happen to okay, मुझे उसके बारे में बात करनी पड़ेगी ना यार, क्या बोलते हैं? This whole which you can't see, but the IKEA pegboards and जो पूरा arrangement किया था, like something which obviously helped me into my design productivity thing. Sorry, I need that. But also helped me into the content creation because I needed good backdrops, right? So I'm gonna talk about what creating content is not just about having a good quality video and audio. You need good lights and backdrops. So now this can be my transition into that's when I bought or jugaad this studio light and एक सेकंड से कुछ आ रहा है. कमेंट्स में आते हैं सर, थोड़ी देर में कमेंट्स में आता हूँ. कंप्लीट दिस थॉट ना मिस हो जाएगा. That's when I bought this jugaad or jugaad this studio light. Like I'll explain which talk about how I got this light under 4K with jugaad. This can be a good point of like I can show how I did this video. I think वो देख सकते हैं पर देखना पड़ेगा. लेकिन लाइट आ गया. Now for backdrops for a designer isn't what better than IKEA. So I got these IKEA pegboards, IKEA cells. इस वाले में क्या करूँगा, like I'm writing 2 lines, but this will have 2-3 lines which will talk about this IKEA pegboard which is called this. I got this size with these accessories. तो वो मैं fill कर दूँगा. अभी मुझे पता नहीं, मैं देखना पड़ेगा रियल में उसका राइट. सेम कुछ for cells, कौन सेल का नाम पता नहीं है and all that I have to do. तो वो देखना पड़ेगा. and उसके बाद this should be workable और ये अच्छी लाइन निकल आएगी. So good script एक पहुँच रही अच्छी से. यहाँ पे हो गया. This will talk about like I'll have B-rolls of the whole thing and all that. Like I don't want to talk about, अब हर चीज़ के बारे में बात करने जाऊँगा तो बहुत टाइम चला जाएगा. This has backdrops वाला idea आ गया. That's why you need outline or theme. So ये हो गया. And yeah, I guess else. Now that work and content was sorted out, it was time to sort chill sessions. Like I'll find a better way and creating a space for my son. इसमें दिस इज थोड़ा टफ. इसमें क्या है, मेरे पास ज़्यादा स्पेस है नहीं. लाइक आई एम सेइंग कि चिल के लिए तो क्या है, मेरे पास बीन बैग है,
I watch game, like I play around and all that, right. uh yeah, one thing I, इसमें कुछ चीज़ डालनी पड़ेगी. Got this टी-शर्ट रैक जो लाया वो भी डाल दूँ ना भैया, क्या नहीं. So रैक कॉस तो नहीं था ना, जैसे रैक. So I can change costume and record content easily. ये लाइन थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, बट या चिल आउट सेशन, ये वाला थोड़ा लाइक जिसमें 3 पैराग्राफ है, बट दिस विल गेट टू अनदर लेवल. Like a space where I can spend time and chill. This was the last priority. So less space. This was so I think this this I can talk about, as I have a 2-year-old kid who touches everything. I think I had to arrange my office in a way that nothing is on floor or in his reach. So everything is wall attached. Oh, that's a good line. Attached. And then I can just show the cells, cable managed, and I got a wool flooring, so it will be easy for him to play. Yeah, and these are part short होगा, ज़्यादा कुछ होगा नहीं, but this would cover most of the stuff. Then I'll just add some shots of like B-rolls of everything and yeah, I think I don't want to talk about the smart bulb thing because लंबा हो जाएगा फिर वापस वीडियो फिर से यार. If I go to smart details, that can be one different video, I automate, like made my whole office smart, how I automated everything, how do I cable manage and all that, right? So that can be different videos. And I mean, I think I have videos of me setting up the standing desk, so that can be a different video. How did I got a standing desk without spending 40K, right? So this can be like इंडियन ऑडियंस हो सकता है कि भाई यार हिंदी बता सकता हूँ मैं. आई कैन टॉक अबाउट कि यार ये इश्यूज आ रहे थे. सो व्हेन टू डिज़ाइन माइंडसेट, सोचा कैसे काम करते हैं, लाइक एवरीथिंग हैज़ डन विद डिज़ाइन माइंडसेट ओनली. दैट्स हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. सब हो सकता है बातें एंड दैट इज देयर. दिस अ गुड स्क्रिप्ट. आई हैव टू गो टू चैट्स. अब इसको अभी इसके लिए बहुत ऐसे गुड, आई थिंक कितने घंटे हो गए हम स्ट्रीम करते हुए? 1 घंटा हो गया. 1 घंटे में इज गुड stuff which came out. Now I'll need another an hour to clean this up, add details, make it like a transcript which I can just play in front of me and just speak, right? So वो बनाऊंगा मैं उसको वापस, मे बी उसकी भी स्ट्रीम कर दूँ, देखते हैं. बट या दिस हैपेंड. अब चलते हैं कमेंट्स में. ओके, अब भाई लोग आ गए हैं तो लेट्स डू द कमेंट्स पार्ट. डुप्लीकेट दिस एंड कमेंट्स बनाएंगे. यप, स्क्रीन पे जाएंगे इस वाली पे, ऐड स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन, ये आ गया. उसमें आई विल गो टू eCam पे, आई विल गो टू कमेंट्स एंड रिएक्शंस. इसकी साइज होगी, शेप की वो होगी आई गेस टॉल. I know I can do square. You know what, let me just do custom. Perfect. Now I can increase this like this. और यहाँ comments आपकी, you can now you all can see your comments and also see the things I see in this. ग्रीन स्क्रीन कर देंगे तो आपको बस कमेंट्स दिखेंगे. नाइस. अक्षय चला गया ग्रीन स्क्रीन पे, बट कमेंट्स दिख जाएंगे ना. या कूल. सो कमेंट्स पढ़ लेते हैं एक बार यार फटाफट. लेट्स जस्ट स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं. आंसर, हाउ यू? अरे ट्रैवल कर रहे हो आप, कोई नहीं. हेलो सेंशी भाई, हाउ यू? गुलशन सर क्या हाल है? अनुराग सर, जी एम बच्चे से राम हो चुकी है, पढ़ने से राम हो चुकी है. बटर स्मूथ, यस सर. सो बटर स्मूथ अगेन,
थैंक यू सर, हाउ आर यू? ऑल गोइंग गुड? अनुराग का एक क्वेश्चन है यार. हैव यू ट्राइड, यू नो व्हाट, लेट मी रिमूव दिस. मज़ा नहीं आ रहा ये वाली कमेंट सेक्शन में ऐसे. आई विल डू दिस. अच्छा, पढ़ भी पाओगे तुम लोग. Sir, have you tried using iPad as a graphic tablet from Mac? There are applications like AstroPad, but they are expensive. When you walk around, it'd be cool to directly sketch live in EI and PS. हाँ sir, so I tried this, but I don't sketch this much. ठीक है, उतना sketch नहीं करता हूँ मैं. But what I did was, I have a graphic tablet actually. I bought a Wacom. और मेरे पास पड़ा हुआ, which I don't use anymore because setup में it's a regular use है ही नहीं. So I'm just wasting the space if I use it. But in AI you can direct sketch. Like there's Adobe Illustrator का tool ही आ गया AI का, right? So मैं उसी में sketch कर लेता हूँ if I have to do. So if you remember, I don't know how many of you know, let me take you to the screen sharing wala screen and show you something. So I did this doodly कौन सा एक icon बनाया था मैंने, ठीक है, बहुत सालों पहले. I think this was my first product on Product Hunt which I launched. A design product था ये. Very simple icon pack. 2 साल पहले, सी 2 साल पहले, fuck. Which was just like an icon pack but doodles, right? So if you were creating wireframe, you can use these icons to create something. So it was fun product, very random thing. इसमें मैंने मार्केटिंग बहुत क्रेजी की थी. Like that was the crazy thing कि बहुत ज़्यादा क्रेजी मार्केटिंग कर रखी थी. ट्विटर पे बहुत पोस्ट किया था मैंने इसके बारे में. If you go back to my Twitter ना, you will see कितना पोस्ट किया था मैंने. It was actually featured in a YouTube video by Puneet Chawla and all that. And all this, like so many different things were happening. और तब बहुत चला था, like देखो लोग शेयर करे जा रहे थे. It was good. और अभी भी like this still makes me money, by the way. I still have this on Gumroad for $1 and people still buy it. So this still makes me money. So if you are looking for something, like you don't need to have, like people think कि products बनाने के लिए ना बहुत crazy product होना चाहिए. नहीं, but you just have to have ideas. एक बार तुम idea ले आओगे ना. What's that? So this I made. और इसमें मैंने वही किया था. Actually these icons all are designed in Adobe Illustrator. Like मेरे पास पेन से ड्रॉ करने लग गया उसके अंदर, तभी ये वेक्टर में, एंड देन आई कैन कन्वर्ट देम टू फिग्मा. मैं सोच रहा हूँ पिका आइकॉन्स है ना, उसको परचेस करता हूँ, पूरा उठाता हूँ, एंड आई मेक द पिका डूडल्स, लाइक पूरे आइकॉन से डूडल्स बना देता हूँ. आई डोंट नो इफ इट्स पॉसिबल. ये उसमें इशू आता है कि नहीं आता, क्या बोलते हैं, कॉपीराइट इशू होता है कि नहीं होता, आई डोंट नो. लाइक आइकॉन्स तो आइकॉन्स ही हैं, बट वी विल सी. आई टॉक टू आशीष फिगर आउट दिस विद, बिकॉज ये आइकॉन पड़ा हुआ है. आई लाइक दिस. कैन बी गुड डूडली कॉन्स का, if you're getting wireframes, can be good fun. यूज कर सकते हो आइकॉन आराम से. एंड इफ आई हैव द कंपोनेंट लाइब्रेरी, लाइक अच्छे से बनवा लूँगा पूरी कंपोनेंट लाइब्रेरी, तो और अच्छा बन जाएगा. सो यस सर, वर्क अराउंड अभी यही है कि आप उसको ऐसे यूज़ करो. अभी आई डोंट नो एनी अदर वर्क अराउंड, कभी ट्राई नहीं किया है, तो यही है. अक्षय सर, यो क्या बढ़िया चल रहा है सब. चलो लंच का टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं. दिस इज अ गुड एक्सरसाइज. मेरे को तो मज़ा आया. I'm gonna like, I don't know if I'll create even a thumbnail for this live or not, but yeah, this was fun. Wanna keep doing these lives. मिलते हैं, bye.